How many questions we have discussed from assignment 2? Ma'am, we have to start with question number 7. Question number 7. Okay. Let me share the screen first. Okay. We have done up to question number 6. Is it? Is the screen is visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Question number, just a minute. Question number 7. So here the question is, define an interface to declare the method display and count. So we are going to define an interface. The interface will have the method display and count, and a class, another class or a class lenge, it will contain a static data member max count. Instance name will be name, okay, and method display. This display method we are going to define in order to display the name of the person, okay, and count the number of characters present in the name of the person. So count method will count the number of characters present in the name of the person. So check the program here. So first we complete these 3 questions, then we will move to the programs on your exception and handling. Close this part. DSA Lab assignment 2. So here I'm just making a class. What is the question number here? Question number 7. 7. Question 7. Then we will have pocket static void main. Now here we are going to define an interface. Let here I have defined the interface is A. So interface में दो method है. One is your void display, and according to the question, another method here is void count. Two methods are there. Then we will move to the class. Class. And here I will define the class as V,
implements A. So what is asked in the question? In the class, you are going to have which variable? Uh, a static data member called max count. So here we are going to define static int max count. And next one, we are going to take the name as we are going to count the number of characters present in the name. Then यहाँ पर define करो public void display. This method is going to print the name. System.out.println the name is plus name. Okay. And again we are going to define another method public void count. तो ये method का काम क्या है? What is the use of this method? It will count. तो Count count करने के लिए हमें क्या चाहिए? number of characters in name. Max count. Either we can use the for loop, otherwise we can simply write which method? Max count is equals to क्या लिखेंगे? So it will count the number of characters. I can use either यहाँ पर for loop use कर सकते हैं or int I equals to 0, I less than plus. That we can use in this way, but there is no need to max count equals to the string. Okay, either we can write in this way or simply I can write here max count is equals to Name dot length. name dot length. So I will remove this part. मैं इसको हटा रही हूँ. Override हो जाएगा. System dot out dot println the characters, the total characters, the total the string is plus I'm just removing this one. So in this method, in main method, what we need to do? किसका object create करेंगे? Can I write it in this way? Which I have already completed. Dot display dot yes, it's correct, Yash. So then I will run the code. I got the error. Exception आ गया. Oh, I have not taken the name.
Is it? Are you clear? Are you clear with this question? Yes, ma'am. Okay. Complete it quickly, then we will move to the next question. Have you all completed this one? No, ma'am. Completing. Doing, ma'am. Okay. Okay. Just complete it. We will move to the next part. Over. एरर आ गया. किसका एरर आ रहा है? Ma'am, me. Okay, let me check what is the error. Max count. Length का spelling correct लिखियो. LENGTH. Sorry, ma'am. Change it. Anyone is saying something? Okay. Okay. All of you completed? Oh, you start preparing. Okay. Over. Ma'am, can you show that for 1 second? This part. You start preparing Yes, ma'am. for your this part. ये क्या हुआ? What is your problem here? Done. Okay. Rest of you completed? Yes, ma'am. Okay. Should I move to the next question? Check the next question here. Define an interface. एक interface define करोगे. The name of the interface will be employee interface. Okay. And here you are going to define the variables. Sorry, method, word, display name, give bonus, and here you are going to define an abstract class employee. एक abstract class define करोगे. In the abstract class, you are going to have these variables: employee ID, first name, last name, salary. Define a concrete class. यहाँ पर क्या बोला गया है? Check the word carefully. Concrete class manager. Okay.
ओके, एक मैनेजर कंक्रीट क्लास लेना है, वो कौन सा क्लास होगा? इट विल बी द सब क्लास फॉर, it will be the subclass of employee. So concrete class manager, it will extend from employee. Okay, and perform the following task. Define the appropriate constructor in the class hierarchy. Constructor define करोगे. Manager class में क्या रहेगा? Variable. What will be the variable in the manager class? Bonus. Bonus. हाँ, तो अब कंस्ट्रक्टर डिफाइन करोगे. इंश्योर दैट बोनस अमाउंट शुड नॉट बी नेगेटिव, ओके, एंड जीरो. यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, वी विल जस्ट कीप दिस पार्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग. इंश्योर द बोनस अमाउंट शुड नॉट बी नेगेटिव एंड जीरो. Create an array of interface reference variable and populate the manager object. Employee interface का हम लोग क्या करेंगे? Array of object बनाएंगे, and we are going to populate the this one. Write a test class. एक test class बनाना है. It will implement the above said requirement of the interface, implementation and exception handling. So a number of things are being defined here. बहुत कुछ लिखा गया है. So first we will do this one. Just a minute. Is my screen is visible to all of you? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Let me check. Just a minute. Is it visible now? Yes, ma'am. I have stopped the presentation. Okay, so what will be the class name here? The question 8 here, let I have provided the class name as manager. Or here I will write simply manager. Public static void main. Or I will write here question number 8. Question 8. तो हमें यहाँ पर दो चीज डालना है. एक है इंटरफेस. Interface, it is an example of multiple inheritance. Employee interface, I think. Employee interface है तो what is the name of the interface? EMP interface. So here we are going to define two methods, display employee and give bonus. Void display employee, void give bonus double amount. Give bonus here. Then the next part is we need to define an abstract class. So what is the name of the abstract class? Abstract class employee. So here the variable is EMP ID. What is the next variable? String first name. Then Last name. string last name. And the next one is Salary. salary. Float salary.
Yeah, this one is your abstract class. Then another class it is being defined. Class का नाम क्या है? Manager. Manager यहाँ पर क्या होगा बताओ? क्या होगा यहाँ पर? Extends employee employee and implement Implement interface. implements employee interface. EMP interface. So यहाँ पर एक वेरिएबल क्या बना है? आई थिंक एक बोनस एक है ना? फ्लोट bonus, isn't it? Can I have constructor in the employee? Empty, empty ID. This dot empty ID is equals to empty ID. This dot f name is equals to f name. This dot l name is equals to l name. This dot salary equals to salary. Manager. Can I have all the field here? So can I take here super keyword ले सकते हैं? Can I use super keyword here? Yes, ma'am. Then this dot bonus is equals to bonus. Then what are the undefined methods here? Display employee. System.out.println ID is public void. Name of is frame. Yes, here we are going to write salary. Should we are going to have the salary. Salary में यहाँ पर क्या display होगा? What will be the value here? Then what is the next method?
Give bonus. Give bonus. My next method is क्या है? Give bonus. ये return type है और it is as it is. Void give bonus. यहाँ पर क्या है? Double amount. So we will take the amount from the main method, isn't it? So यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? Bonus is equals to, here we are going to update the amount. So as here we are going to update the amount. यहाँ पर bonus लेने की कोई जरूरत है? Should we go with the value here? और इसको सेट कितना कर देंगे? वो टाइप कास्टिंग के जैसा लगेगा। यहाँ पर हम लोग 0 सेट कर देंगे, यहाँ पर नहीं, वो नहीं बोल रही हूँ. Okay, leave as it is. No, I will come to that point. Bonus equals to amount. Here salary will be updated with, salary is equals to Salary plus bonus. salary plus bonus. सैलरी कौन सी क्या है? टाइप कास्टिंग होगा ना यहाँ पर. सैलरी इज ऑफ ओके. देन यहाँ पर system.out.println कल is plus I will do a little bit of modification again here. So यहाँ पर क्या बोला गया है? What is the next part of the question? यहाँ पर क्या create करना है? Array of interfaces. Array of interface. Array of interface. What is the name here? Empty interface E. Okay, here I am writing E is equals to new. यहाँ पर क्या होगा? Empty interface. Let here I will provide the size as 2. Then what we are going to do? Let here define the scanner class. Include java dot util dot scanner. Scanner is equals to new scanner system.in. So for how many objects here I am basically creating? 2 objects. So 2 objects create करने के लिए what are the different variables that we need to take? One is your
employee ID. Then next string first name, string first name. Then what are the variable? Other variables are salary. डबल सैलरी और एक क्या है बोनस isn't it? यस हम लेकिन बोनस को हम लोग कंस्ट्रक्टर में क्यों ऐड कर रहे हैं जब हम लोग बोनस का एक मेथड नहीं ऐड करना है उसे हटा देंगे यहाँ पर अभी के लिए रहने दो ठीक है अदरवाइज यू टेक इन द कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कितना वैल्यू लोगे 0 ओके आई विल शो यू बोथ द वे हाउ वी कैन डू इट यहाँ पर हो गया बोनस देन जस्ट टेक द लूप फॉर int I equals to 0 I less than here I plus plus enter the ID id equals to sc dot next int then enter first name. Okay, all of you just start doing assignment 2 also. You will I will send you okay because you need to submit it. You are going to complete the assignment 2 also. Then first name is equals to. So you got the link for submission of the first assignment? यस मैम Yes, ma'am. Okay. So soon you are going to get you have the link for the second assignment also, right? Yes, ma'am. You are soon going to complete it. So as after this lab, you just write what are the answers we have written, okay? Because you need to submit it. Then custom.out.println enter the salary. And यहाँ पर क्या होगा salary here I have taken sc dot next double यहाँ पर हम थोड़ा डाल दें exception handling custom dot out dot println enter the bonus. So what is the condition it is written for the bonus? It should not be a non-negative number. Sc dot it should be non-negative and should be greater than 0, isn't it? यस मैम Double. So I will put it in the try block. So keyword हम लोग नहीं पढ़े हैं ना? We have not discussed throw keyword. नो मैम So random. Okay. So leave it as it is. After discussing throw keyword, I will change this line. Okay. Here. Relative. I'm just putting it in if else amount is greater than equals to 0. I will do it down. Yeah. Okay. So what is the thing that I have left with? और क्या रह गया है अब हम लोग क्या इनिशियल इंस्टेंशिएट करेंगे वी आर गोइंग टू इंस्टेंशिएट द मैनेजर आई इक्वल्स टू यहाँ पर क्या लिखेंगे न्यू मैनेजर मैनेजर यहाँ पर जो अमाउंट है
we will simply put यहाँ पर 0 डाल देंगे, otherwise we will remove that, यहाँ से ये bonus field को हटा देंगे. Okay, so here I am just showing you. ये पहला हो गया employee ID, next one is your first name, next one is your last name, then उसके बाद क्या है salary, then amount. So यहाँ पर amount की जगह क्या डालोगे 0. Okay. Otherwise we can remove this. Either we can do it in this way or we can simply we are going to remove this. कौन सा field को remove करेंगे बोनस bonus को. Okay. Either way we can do it. Okay, so we don't need this line. यहाँ से इसको पूरा हटा दो. Okay. Then which part we are going to call EI dot display employee. Now here check if amount is greater than equals to 0, then which method you are going to call? Bonus. यहाँ पर amount में AMT डालोगे. Else. यहाँ पे क्या print करोगे? What is the value you are going to print? Invalid input. Okay. Is it correct? देखो तो otherwise I have skipped anything else. Let me run the code. Enter employee ID. Enter first name. Okay. So, enter bonus. Okay. Then again it is asking enter employee ID. Enter the first name. Yes, what is the title? Sahay. SAHAY. Bonus. Let here I will put the 0. Check. यहाँ पर क्या है क्या? It is not showing the message. So यहाँ पर amount का क्या करोगे? What you are going to do? Here amount here the salary it is showing 0. It is not displaying the salary here. ये क्या हुआ? I made a mistake. Just a minute.
Okay. So here I made a here the value it should be salary. Okay, but here what is the problem? Display if amount is greater than equals to 0. Okay, here I made the mistake. यहाँ पर क्या होगा? If the amount is greater than 0, the first one. Just salary. Okay, so we are going to change this part later on. Write down this code. Okay, just note it down. मैम एक मिनट मेन वाला पार्ट दिखाइएगा. हाँ. Just let me know once you complete this one. मैम मेरा एक एरर आ रहा है, प्लीज चेक कीजिए. हाँ. Are you sharing the screen? यस मैम. Okay. Share it. Ma'am, can you see my screen? हाँ, it is visible. यहाँ पर न्यू मैनेजर एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये क्या हुआ है सैलरी दिए हो ना. यस मैम. हाँ वो मैनेजर वाले क्लास को जाओ. गो टू दैट मैनेजर क्लास. EMP आईडी होगा शायद, गलती हो गया भाई. सॉरी मैम, एक मिनट. ओके. यहाँ पर तुम EID लिखे हो, EMP आईडी क्यों दोगे? मैम क्योंकि नहीं, यहाँ पर EID लिखे हो. ओके, नाउ गो टू द मैनेजर क्लास. यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी, ये बोनस वाला हटा दो. ये वाला. हाँ ऊपर ये जो मैनेजर क्लास मैनेजर कंस्ट्रक्टर में वो रहेगा. दैट विल बी देयर. जो कंस्ट्रक्टर में फ्लोट बोनस लिखे हो उसको हटाओ. कंस्ट्रक्टर में, नॉट दैट वन. ये जो मैनेजर कंस्ट्रक्टर लिखे हो कंस्ट्रक्टर यहाँ पर 922 आदर्श 922 लाइन नंबर 22. Run the code. Ma'am, still it is showing error. Okay, you run it. You just run it. Once run it. यहाँ पर क्या क्या दिया? हाँ, या तो तुम वो सैलरी वाला फील्ड डबल लिए हो. दैट डी तुम्हारा कैपिटल है बोनस में साइड से कहीं पर एक डबल डी कैपिटल लिए हो. हाँ लाइन नंबर 21 वो डी को स्मॉल करो. डबल लेना होगा मैम. वो सैलरी को डबल ले लो. हाँ, और यहाँ पर ये डबल डी को स्मॉल करो. एंड ऊपर वो एम्प्लॉय इंटरफेस वो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिए हो वहां पर फ्लोट के जगह डबल लो सैलरी में. डबल है मैम. डबल है, ठीक है. यस मैम. नाउ रन करो. ओके, जस्ट स्टॉप शेयरिंग. Is my screen is visible to all of you?
No, ma'am. Yes, ma'am. Now it is good. Okay, note it down. मैम मेरा भी वो थोड़ा सेम रह रहा है प्रॉब्लम। शेयर करो स्क्रीन। शेयर योर स्क्रीन। मैम कैन आई गिव यू द पिक्चर? हाँ हाँ, यू सेंड इट। मैम एक मिनट थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। हाँ, जस्ट अ मिनट। दिस वन। यस मैम। वो डबल बोनस हटाओ। In line number 23, remove that line. Amro, यस मैम। और कहीं पे एरर है? मैम एरर तो और कहीं पे नहीं है लेकिन तब भी शो कर रहा है। वो अभी रन करो तो। मैम एरर ही शो कर रहा है। क्या एरर शो करे? मुझे एरर थोड़ा दिखाओ। Take that screenshot and send it to me. What is the error you have? Rest of you completed or you are doing? doing मैम। कंप्लीटेड मैम। Okay. Construct the string is undefined. अच्छा, तो ऊपर वाला कोड भेजो तो। हाँ हाँ, you have sent it. How you? तो यहाँ पे डबल सैलरी लिए हो ना? एब्स्ट्रैक्ट टेम्पलेट डबल सैलरी इन लाइन नंबर 21 वो फ्लोट सैलरी लिखे हो, दैट मेक इट डबल सैलरी। ओके मैम। ओके, हाँ, वो फ्लोट के जगह डबल ले लो। नो इट्स फाइन मैम। Yes, you can take in this manner also. It is correct. Okay, it's correct. Yes.
मैम वो ऊपर साइड से दिखाई ना क्या हुआ? मैम ऊपर साइड पोर्ट हाँ हाँ, दिस पार्ट. यस मैम Yes, Raghav. Sutosh. Yes. Yes. Okay, Asutosh Ranjani, you are correct. खत्म होने के बाद बताना मुझे, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी. Have you completed? नो मैम Yes, ma'am. Okay. Okay, complete it quickly. We will move to the last question of this assignment. Then we will move to the exception handling that we are discussing in the last class. Anjali. Yes. वो bonus वाला हटा दो. From the manager class, remove this dot bonus. If you have taken that float bonus, उसे 0 ले लो. Okay? ओके मैम. And यहाँ पर जो लिखे हो ना लाइन नंबर 32 में डबल Yes, ma'am. बोनस, वो डबल हटाओ क्योंकि ऑलरेडी तुम फ्लोट बोनस डिक्लेयर किए हो, तो डबल हटा दो. ओके ओके. ठीक है. डबल बोनस इक्वल्स टू अमाउंट लिखे हो, वो डबल हटा दो और अमाउंट का डेटा टाइप फ्लोट ले लो. कैन यू, आई डोंट थिंक यू विल फाइंड एनी प्रॉब्लम. Have you completed?
मैम नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। ओके, दिस पार्ट। यस मैम। मैम हाँ मैम मैं बोनस, मैम जो आपने एल्स वाला पार्ट लिखा है ना, इंटरवेट बोनस, हाँ, ये मैम पर। मैम उसमें मैंने, हाँ हाँ ये तो, मैम उसमें मैंने सोचा कि मतलब री एंटर बोनस करके कुछ मतलब बनाया जाए, तो हम्म तो तो मैंने क्या किया, एक मेथड बनाया एंटर बोनस करके, और हम्म उसमें मैंने उसमें रेफरेंस डाल दिया मैनेजर एस का, हम्म और वहां से इनपुट लिया और एस डॉट बोनस किया। लेकिन हम्म। इसमें इंटरफेस का मतलब ऑब्जेक्ट डाल रहा है तो नहीं ले रहा है। फिर थोड़ा प्रोग्राम हो, पार्ट कोड थोड़ा दिखाओ तो मुझे। ओके, हम आर यू शेयर करूँ? शेयरिंग योर स्क्रीन? शेयर करोगे? यस मैम। ओके, शेयर योर स्क्रीन। हम इज इट विजिबल? No, till now it is not visible. Agua. Let me check. स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पर स्टैटिक वॉइड एंटर बोनस, ऊपर ऊपर थोड़ा ऊपर जाओ। हाँ, ये जो स्टैटिक वॉइड एंटर बोनस मैनेजर एस लिए हो, स्कैनर हो गया एस डॉट बोनस। ओके, आप नीचे आओ, एस डॉट बोनस, यहाँ पर बोनस इनपुट करे हो ना, ठीक है। तो वो मैम लेकिन फंक्शन तो एक एक बार कॉल पार्टिकुलर, किए, यहाँ पर फिर बोनस क्यों एंटर किए हो? हम जैसे अगर यूजर इनवैलिड बोनस करता है तो उसके पास ऑप्शन यहाँ रहेगा पर कि देखो वो फिर तुमने से री क्या एंटर कर किया सकता है। हाँ ठीक है, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। यहाँ पर एंटर बोनस किए हो, यहाँ पर यूजर क्या कर रहा है, बोनस इनपुट कर रहा है। है। यस मैम। ठीक है, इन 79 बोनस इनपुट किया तुमने, इस बोनस को चेक करके SI डॉट गिव बोनस कर दिए। ये मेथड को तो कॉल नहीं किया ना बोनस इनपुट करने के लिए, यहाँ पर तुमने बोनस नो के लिए मैम, एल्स लिखे थे। पार्ट में करने वाला। यहाँ पर वो जो डबल बोनस इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट INT को हटा दो। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि अगर बोनस का अमाउंट, अच्छा अच्छा ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो ये हो गया एल्स इनवैलिड। यहाँ पर लिखो टेस्ट डॉट, ये मेथड का नाम क्या लिखी, क्लास का नाम क्या है? टेस्ट। टेस्ट है, ठीक है लिखो। यहाँ पर अलग से एक मेथड क्यों बनाया हुआ? अच्छा ठीक है, लिखो टेस्ट डॉट टेस्ट, वो सेम ये मेन मेन मेथड। हाँ ठीक है, बस एंटर बोनस लिखो, चलेगा? ठीक है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा, लिखो लिखो, देखती हूँ मैं क्या एरर आ रहा है। आई नहीं लेगा हमें क्योंकि यहाँ इंटरफेस पर, का, हाँ वो क्यों नहीं ले रहा है ना, यहाँ पर तुमने कितना ऑब्जेक्ट डाला हुआ है?
मैनेजर एस एक ही ऑब्जेक्ट बना रहे हो? हम लग रहा है इसीलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है। हाँ, इसीलिए वो एरर दिखा रहा है। वहां पर तुम और एक वेरिएबल ले लो तो वो काम करेगा, ऐसे में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो मैनेजर एस है ना, वहां पर सिंगल ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर तुम अरे ऑफ ऑब्जेक्ट डालने की कोशिश कर रहे हो। इवन दो इट इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट इट विल नॉट टेक, वो एरर दिखाएगा। इंटर बोनस ये इंटरफेस का है, वो नहीं दिखाएगा। और मैम इंटरफेस जो है सिर्फ मेथड दिखा रहा है। यहाँ पर एरर ही आएगा, उसे हटा दो। वो जो बोनस वो लाइन लिखी हो ना, फिर से यहाँ पर लिख लो। हम कौन से? वो जो स्टैटिक मेथड में बोनस इनपुट किए हो ना, एस डॉट बोनस इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट डबल, वो लाइन को फिर से लिख दो। ऐसा नहीं दिखाएगा, ठीक है? यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। ओके। Okay, the last program is there. Can you do the last question by yourself? Can you show the codes again? The previous question. Just isn't my screen is not visible to you? No, ma'am. Okay, just a minute. I'm showing you the question. Just a minute. Let me share the screen again. No, ma'am. It's visible now. It's visible? Okay. Question, you want to show the question now? Ma'am, no, the codes. Ma'am, the previous question, the program. Yes. क्या हुआ? Question 8 program codes. Question 8 program code. Okay. What is the problem? Ma'am, can you show me that give bonus function once again? हाँ. Give bonus. This one. Nothing is visible. Yes. Ma'am, nothing is visible on my screen. Nothing is visible. Oh, now it is Okay. visible. Okay. Let me say again. Wait, Resume the presentation. Now check. Is it visible? yes, ma'am. String first name, string last name, double salary. ये किसका एरर आया है? Sudhanshu, you got the error? Yes, ma'am. यहाँ पर नेम में क्यों एरर आ रहा है? एफ नेम एंड एल नेम में उनका स्पेलिंग कहीं पर इधर उधर किए हो क्या? एम्प्लॉय क्लास होते हैं किसका है? बोनस। इसे और एक बार रन कर दो तो प्रोग्राम को। नीचे You run वाला the ma'am. code? Screen से. हाँ. Okay. Wait, ma'am. 1 second. Swanuk, you got the answer? वो बोनस वाला मेथड चेंज करो, गिव बोनस. ओके, यू गॉट द आंसर? Yes, ma'am.
वो बोनस इक्वल्स टू अमाउंट दिया हो, उसके बाद लिखो वो जो सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस बोनस। एरर है। ओके मैम, ओके मैम। सिबोन यू आर आल्सो पुटिंग इट। सिबोन का कहाँ पर एरर आ गया? ये पब्लिक स्टैटिक लिखो। राइट फ्रॉम द मेथड नेम एज पब्लिक स्टैटिक ओके मैम, वर्ड ओके। मेन। ओके, और यहाँ पर तुम्हारा वही डबल सैलरी सुपर वो सैलरी प्लस बोनस। अच्छा, यहाँ पर जो क्या मैनेजर क्लास में यहाँ पर सुपर लिखे हो, वो एम्प्लॉय एब्स्ट्रैक्ट क्लास को वहां पर कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए थे सिबोन? यस मैम। वो हाँ, वो एम्प्लॉय क्लास वाला मुझे थोड़ा स्क्रीनशॉट दो तो। ओके मैम। ओके, एम्प्लॉय क्लास, ये तो स्क्रीनशॉट ऑफ द एम्प्लॉय क्लास। हाँ, ले सकते हो। यस, यू कैन टेक इट। सिबोन, यस मैम। वहां पर सैलरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फ्लोट लिए हो, ठीक है? मैनेजर क्लास में सैलरी को डबल लिखे हो, ओके तो मैम। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में उसे फ्लोट से डबल बना दो। एम्प्लॉय क्लास में मेक इट फ्रॉम फ्लोट टू डबल। चेंज किए? यस मैम। हाँ, वो सैलरी का जो डेटा टाइप फ्लोट है उसे डबल बनाओ, और पब्लिक वॉइड बोनस के बाद वो नहीं तो क्लास पब्लिक क्लास क्वेश्चन 8 के पहले और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट दो। तुम्हारा एक ब्रैकेट मिसिंग है। Sudhanshu, you are having मैम इन problem मैनेजर here क्लास। in the manager. Yes, ma'am. Okay, उसका ऊपर वाला स्क्रीनशॉट दो। Ma'am, in manager class, I have an error. The error is the type manager must implement the inherited हाँ, abstract टाइप method. मैनेजर। हाँ, क्या हुआ है? टाइप मैनेजर Must implement the inherited abstract method in employment interface dot give bonus method. हाँ, तुमने यहाँ पर एक्सटेंड लिखे हो ना, यू हैव इनहेरिटेड द मैनेजर। Yes, ma'am. Why it is showing the error? I'm just unable to find out the error here. वो फ्लोट बोनस को हटाओ, मैनेजर क्लास से वो बोनस को हटाओ। Remove that float bonus. Okay. In line number 23, line number 23 से float bonus हटाओ। सुधांशु, Yes, am I ma'am. audible? और वो फ्लोट बोनस की जगह वहां पर डबल, हाँ डबल बोनस है, ठीक है, वो फ्लोट बोनस हटाओ। अब कुछ एरर आ रहा है? No, ma'am. It is working. सिबुन, तुम्हारा एरर ठीक हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Should I move to the next question? Yes, ma'am. Okay. Now check.
The next question, the last question. Design a class. Design a package that contains two class. एक package बनाना है. यहाँ पर दो class रहेगा. One is the student class and the other one is your test class. The student class has data member, name, roll number, and instance method input and output. Student class में data member आएगा name, roll number, method input output. Test class में data member आएगा mark 1, mark 2 and instance method input output. Student class is extended by which class? Test. Another package, it will consist of a interface sports. दो attribute रहेगा score 1 and score 2. Okay, so here it is one of the simple question. ये बना सकते हो? Can you do this one? Are you able to do this one? Yes, ma'am. Okay, just do this one. यहाँ पर दो पैकेज बनाओगे. Okay, एक पैकेज में ये दो क्लास रहेगा. इन दोनों क्लासेस में these are the methods. Okay, these are the instance variable. Just try this one. देखो तो बनता है कि नहीं बनता है. Yes. Showing error implements codes. Where you are having error? Package Q9. Showing error, madam, in question number 9. Have you created the package? Yes, ma'am. और ये टेस्ट क्लास बनाए हो दूसरे पैकेज में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर पैकेज कहाँ पर है? मुझे दिखाओ तो वो जो पैकेज एक्सप्लोरर में. ये तो है पैक 1. पैक 2 हो गया स्पोर्ट्स डॉट जावा. अच्छा, Q9 में क्या लिखे हो? वो पैकेज Q9 हटाओ वहां से, बिकॉज आई थिंक इट इज देयर विद इन योर डिफॉल्ट पैकेज. Okay, ma'am. Okay. ठीक है. Yes, हाँ, ma'am. उसे हटाओ. इंपोर्ट माई पैक 01 क्यों, उसके बाद लिखो इंपोर्ट माई पैक 02. Okay, ma'am. Okay. ओके, तब एरर नहीं आएगा. Okay, ma'am. बाकी सब सही है. हाँ, बना पाओगे सब? यहाँ पर what you are going to do, यहाँ पर दो पैकेज बनाओगे. This one is pack 1.
finish, and another package, new package. This one is pack 2. Now click on the finish button. Within pack 1, you are going to create a class. अब class का नाम क्या होगा? Student. तो pack 1 में एक student class बनाओगे. क्या बोला है यहाँ पर? Student class में name, roll number रहेगा, input, output, instance method रहेगा. So here string name int role and void input एक method है. तो input method को name int role. So this dot name is equals to name. This dot role is equals to role. Okay. Void output. ये output method में क्या होगा? Here we are going to display the name is name and the role is role. Yeah. ये एक गया. दूसरा क्लास कौन सा बनाना है अंडर दिस पैकेज? टेस्ट. नाउ टेस्ट क्लास क्या होगा? टेस्ट क्लास विल बी यहाँ पर क्या क्या रहेगा? What are the variables here we are going to have? Mark 1 and mark 2. Float mark 1, float mark 2. Okay. Instance method input and output. यहाँ पर instance method ले लो. Void. The method here super. Float mark 1 comma float mark 2. यहाँ पे मैं सुपर कॉल कर सकती हूँ. This dot mark 1 is equals to mark 1 then
this dot mark 2 is equals to mark 2 void display system dot out dot println पहले क्या कॉल कर देंगे the base class method super dot display method है in student class output super dot here also we are going to write here is output then marks are mark 1 mark 2 okay but it is given in next क्या है another package में क्या रहेगा sports interface. in this package we are going to have interface का नाम क्या है what is the name of the interface Sports. yes Sports. sports sports now check here sports में two attribute score 1 and score 2 यहाँ पर मैं बस सिंपली लिखूंगी INT score 1 let here it is INT score 2 equals to 50 अब बोला है देखो तो grand total and score in another class इंटरफेस हो गया और एक क्लास में ग्रैंड टोटल फाइंड आउट करना है एंड स्कोर सो कहाँ पे लेंगे बोलो should I go with the package 2 or I will go with the default package कहाँ पे बनाऊंगी क्वेश्चन 9 यहाँ पर इंपोर्ट क्या क्या होगा इंपोर्ट pack1 dot star import pack2 dot star ओके यहाँ पर कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा increments which class object you are going to do here डॉट इनपुट नहीं है क्या टेस्ट में
Grand total. P dot output. Okay. यहाँ पर क्या करेंगे? What here we are going to do? Double grand total कैसे होगा बताओ तो? Make it all as public. Then P dot mark 2 plus sports dot score 1 score 2. देखो तो okay, are you clear? Are you clear all of you? बन गया? Are you saying something? हो गया सबका? No, ma'am. Okay, do this one. यहाँ पर देखो, if you are not going to make it as public, ये दो method को अगर public नहीं बना, okay, in this it is not going to show ut dot mark 1 and marks 2. Okay, it will give us error. So because these are in the other package, so you need to define the test class में ये सारे method and variables को क्या define करोगे? What should be the access specifier? Public. Yes, ma'am. Done. Done. Have you all completed this one? Student class. This one is your test class. This one is your sports interface. And this one is your question 9. It presents where? It is present in the default package. Have you all completed? Vishal. Yes, ma'am, done. Okay. Vishal. Okay. Any doubt? Vishal Biswal, you have raised your hand. Do you have any doubt? Okay, Pranav.
Swanu completed? Mihika? Yes, ma'am. Okay, Mihika? Yes, ma'am, done. Okay. So should I move to the exception handling? Subhransu? Akars? Have you completed? Ayushman? Yes, ma'am. Okay. Should I move to the next part? Exception handling. Last class we are discussing, but I have not shown you any program. So should I move to the exception handling? Or I will wait for 5 more minutes? Okay. Okay. So this one is your these are the assignment. I think assignment 2 is completely over, isn't it? Next one we have discussing exception handling. One example here I have written. So here what is happening basically in exception handling? I am just removing. Alright, here रहने दो. Check here. Here I am going to create a class. Now here my class name is test public static void main. Okay. So here I am going to write the message. In the main function here I am going to take int a equals to 10. Int c is equals to a divided by b. Here I am writing the statement system.out.println c is यहाँ पर कितना आएगा? And here system.out.println. Here I am writing the statement rest of the code. So when I will run the code, यहाँ पर क्या output आएगा? What will be the output here? Arithmetic Error आएगा. Okay. So when I will run the code, now check here. देखो अच्छे से देखो. Exception in thread main java.lang.arithmetic exception divide by 0. So error यहाँ पर the error is encountering at line number 6. यहाँ पर देखो error कहाँ पर है वो मेंशन कर दिया है और यहीं से प्रोग्राम क्या हो गया? The program is terminating at line number 6. 6. So whenever the error encountered, the program is terminating. But we want to write in such a manner that the program won't terminate, but it will generate the क्या होगा? Error message show करेगा, लेकिन program terminate नहीं होना चाहिए. Okay. Now suppose if I am going to write all those things in the try block, try c is equals to a divided by b. Then control H, control V. So the part that we are thinking that it will give us error, we are going to write in the try block. In catch, we are going to write the exception class. So here system.out.println the exception is, and here I am writing E. Exception. Arithmetic exception E, and here I am writing the
println statement. Now I will run the code. अब मैंने ये कोड को रन किया, देखो यहाँ पर क्या गया. Now what is coming here? The exception is java.lang.arithmetic exception divide by 0. उसके बाद क्या प्रिंट हुआ है? Rest of the code. The rest of the code. Here your program is not terminating. Okay, जहाँ पर error आ रहा है वहीं पर terminate नहीं हो रहा है. So here my error is at line number 8, but my program is not terminating at line number 8, but rather apart from it, it is throwing the exception message. क्या exception आएगा वो उसको solve कर रहा है. उसके बाद क्या print कर रहा है? It is printing the rest part of the code. So if I don't know the exact name of the exception, I can simply write what? Exception class. Now I will run the code. यहाँ पर देखो, we are getting the message, same message. The exception is ये देखो, the exception is here. It is the name of the exception. Okay, and divide by 0. Then what is executing? The rest part of the code. So this is one of the way how we can handle our exception. जहाँ पर error आएगा वो error को show करेगा, उसके बाद rest of the code भी दिखाएगा. So if you want to correct this statement, I can write this statement here. यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, C equals to A divided by B plus 2. So यहाँ पर आउटपुट अभी कितना आ जाएगा बताओ तो? 5. C is plus C. अब देखो क्या आ रहा है, एरर जहां पर आया वो एरर को शो किया. नेक्स्ट, तुम लोगों ने कैच ब्लॉक में क्या किया है? व्हाट यू हैव डन इन द कैच ब्लॉक? We are changing or we are handling the exception, and it is showing us the result, and rest part of the code is executed. Are you clear? Are you clear, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, so this is how we can use try catch block to handle unprovide the statement. Or you have written it yesterday? Ma'am. Okay, so I will anyway. हाँ बोलो. मैम फॉर Yes? इंस्टेंस अगर हमें लग रहा है कि ये स्टेटमेंट में एरर हो सकता है, तो हम उसे ट्राई ब्लॉक में डालते हैं, देन वी आर राइटिंग द कैच ब्लॉक में उसको हैंडल करने के लिए हम डाल रहे हैं. पर ट्राई ब्लॉक में अगर एरर नहीं है तो वो कौन सा प्रिंट करेगा? ट्राई ब्लॉक वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा ना कैच ब्लॉक वाला? वो ट्राई ब्लॉक वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा. देखो ओके. what it is printing. यहाँ पर तुम्हें पता नहीं चलेगा. Let here I will provide the value b is 10. So which statement it is printing? कौन सा ब्लॉक का स्टेटमेंट प्रिंट करा? ट्राई ब्लॉक. इट विल नॉट गो टू कैच. ओके, अगर एरर होगा तो वो कहाँ जाएगा? इट विल गो टू द कैच ब्लॉक. ओके मैम, गॉट इट. Okay. Anyone having any other doubt? If there is a error, then that error part जो सोचो यहाँ पर एरर आ सकता है उसे तुम ट्राई ब्लॉक में लिखोगे. अगर एरर है तो वो ट्राई से कौन से ब्लॉक हो जाएगा? कैच ब्लॉक हो जाएगा. It will show you the type of the exception. And if you want to handle that exception, you can write the code in the catch block. It will be handled in the catch block. Then you can execute the rest part of the code. Are you clear?
Okay, just I will move to the another one. एक हम लोग कल देख रहे थे ना, try with multiple catch. Yes, ma'am. We are just going with the statement try with multiple catch. This one, we are discussing this example, isn't it? Yes, ma'am. Check here, I am doing that one. Multiple catch example. Here let I have defined one array A equals to new int. The size of the array here is 5. Now here I will provide A by A of 5 is equals to 30 divided by 0. Now here I am going to write the statement system.out.println. The value at A of 5 is this one. Okay, now I run the code. Here, कितना exception दिखा रहा है देखो तो, how many exceptions are generating here? How many exceptions here it is generated? कितना दिखा रहा है? How many error it is showing? It is showing a single error, that is java.lang.arithmetic exception divide by 0. So in order to handle, पहले यहाँ पर क्या आ रहा है? As it is a assignment operator, the right side value will be evaluated. Even though there are two exceptions are there, but it will वो कहाँ दिखाएगा? It will show the first one. So whenever you are thinking that you are having the error, you are going to put the value within which block? And here catch. First one is we need to write in the hierarchy arithmetic exception P. Here. Then again another catch block. Catch. This one is array index out of bounds. Again E, you can use different name also. यहाँ पर कुछ गलत है, मैंने exception. Okay. And the last one is catch exception E. System.out.println E. So when I am going to run the code, array index exception this one is your parent exception.
ओके, सो यहाँ पर कौन सा एक्सेप्शन शो किया? विच एक्सेप्शन इट इज शोइंग? अरिथमेटिक एक्सेप्शन. Which, okay, it is just displaying the first exception. That one is your arithmetic exception, because as this one is the first exception that is encountering arithmetic exception. So if this value is being written, तो कौन सा exception show करेगा? If just I am going to print the value in a of 5, which exception it will show? Second one. Array index Second one. Okay, array index out of bound. Now suppose if in this is type of statement, if I am going to write this catch block first, parent class block, then what will happen? यहाँ पर देखो ये क्या आ रहा है? It will show us a error because ये जो exception class है ये कौन सा label में है? It is there in which label? top level. This exception class is present at the highest label. Okay, as it is present in the highest label of hierarchy, वो हमेशा कहाँ पर लिखा होना चाहिए? It should be written at the last. Now suppose if I am going to write one statement here, this one string A. One string I have defined, string A equals to null. और string s equals to null. यहाँ पर मैंने लिख लिया system.out.println s dot length. So which exception will throw now? Last one, parent exception. It will throw the parent exception. Now when I will run the code, here the output will be parent exception. Okay, and it will show us the message java dot null pointer exception cannot invoke the string length because s is null. Write down this example. मैम एक डाउट था. आप पूछो. मैम अगर ये हम लोग a5 इज इक्वल टू 30/0 रखें और पहले में कैच एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड रखें और सेकंड में अरिथमेटिक रखें, तब तक प्रिंट होगा. ऐसे तो यस मैम. एंड दिस वन कमेंट लाइन में डाल देते हैं. ये वाला पहले कौन सा जनरेट हो रहा है? विच एक्सेप्शन? मैम वही मेरा डाउट हो रहा है कि a of 5 तो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हाँ देखो, हाँ a of 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग का जब भी कंपाइलर काम करता है वो हमारा कुछ प्रायोरिटीज, प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी था, कुछ हम लोग पढ़े थे लास्ट सेमेस्टर. यस. हाँ, इक्वल टू कौन सा ऑपरेटर है? इक्वल टू इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर. यस. राइट में जो भी वैल्यू होगा वो कहाँ पर असाइन होगा? लेफ्ट में असाइन होगा. वट एवर वैल्यू इज, ये जो इक्वल टू है यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो कहाँ असाइन होगा? इट विल असाइन ऑन द वेरिएबल मेंशन्ड एट द लेफ्ट ऑफ द ऑपरेटर. यहाँ पर जो भी वेरिएबल का नाम होगा वहीं पर असाइन होगा. ओके, तो जब हम लोग आएंगे पहला कौन सा लाइन, कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? 30 डिवाइडेड बाई 0. 30 डिवाइडेड बाई 0 हो गया, मतलब ये कौन सा एक्सेप्शन जनरेट करेगा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन. अरिथमेटिक. और वो जाएगा क्या? तुम्हारा a of 5 को ही वो नहीं जा रहा है, वो पहले कहाँ पर स्टॉप हो जा रहा है? 30/0 में ही वो स्टॉप हो जा रहा है. दैट इज व्हाई यहाँ पर क्या एक्सेप्शन आएगा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन. इसका ऑर्डर जैसा भी हो, लेकिन जिस वे से एग्जीक्यूट होता है उसी वे से तुम्हारा एक्सेप्शन जनरेट होता है. ओके. यस मैम. Okay, now note down this example.
example note down कर दो along with the output message. Clear? Have you noted down this example? No, I'm writing. Okay. Now check here. If you have noted it down, that we will move to the assignment 3. Okay. हो गया सबका ये वाला? Have you all done with this one? Check, this one is your assignment 3. Okay, so in assignment 3, we have altogether 18 questions are there. 1, 8. Okay, so first 1, 2, 3 questions are based on your exception. So first question, it is a number format exception. Next one, array का है, array index out of bound. And question number 3, here we are going to create which one? Our own exception class. Okay, so the third question is on our own exception class. And there are another 1, 2, 3 questions based on your generics. 3 question है generics के ऊपर. One is your ये क्या method? Generic method and generic variable, generic class. So after that, we are going to start with, from question number 7, we are having recursion. Okay, this is how we are going to do. So another last 2 minutes are there. Okay, anyone having any doubt? Our next class is on Saturday, I think so, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. On Saturday we will complete that throws and this one, वो जो तुम्हारा है ना exception class. We are going to complete all these 3 and start, you all start preparing from the class and object portion. So पढ़ाई शुरू कर दो. Okay, you start preparing because from next week onwards we are going to start with the introduction to data structure. Okay, so in data structure, whatever you have discussed till now, we are just going to